ऑल राइट, नाउ वीव गॉट लिसनिंग पार्ट 2 और यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है बिकमिंग अ वॉलंटियर फॉर एस। ये वॉलंटियर का वर्ड आइल्स में बहुत आता है, इसका मतलब है रजाकार। आप अगर अभी किसी पार्क में जाके एक लिफाफा उठा के उसमें कूड़ा जमा करना कर दें, यू आर अ वॉलंटियर। ठीक है, मतलब आप सोसाइटी के लिए जो काम करते हैं ना, अनपेड वर्क। आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ जाके देखें किसी को प्रॉब्लम है, आप उसको हेल्प आउट करना शुरू कर दें, यू बिकम अ वॉलंटियर। सो बिकमिंग अ वॉलंटियर फॉर एस, एस किसी एनजीओ का नाम होगा कि एस एनजीओ के लिए आपने वॉलंटियर बनना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। वाई डज द स्पीकर अपोलोजाइज अबाउट द सीट्स। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है सीट्स। ठीक है, देखना है कि स्पीकर सीट्स के बारे में अपोलोजाइज क्यों कर रहा है, रीजन क्या है। या तो देखिए ना, ऑप्शन ए क्या है, टू स्मॉल। अगर वो ये कह जी ये बच्चों वाली सीट्स हैं जिन पे हमने आपको बिठाया हुआ है, तो अगर साइज का इश्यू है तो ए राइट आंसर होगा। अंडरलाइन कर लें टू स्मॉल को। और अगर वो ये कहे वी यूज टू हैव टू स्मॉल सीट्स विच वी रिप्लेस्ड विद दीज लार्ज कंफर्टेबल सीट्स, तो ये आंसर होगा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है आर, और हो सकता है ऑडियो में बोले वर। आवर सीट्स वर टू स्मॉल इन द पास्ट बट देन वी रिप्लेस देम विद दीज न्यू कंफर्टेबल लार्ज सीट्स। ऑप्शन बी नॉट इनफ, अंडरलाइन करें नॉट इनफ, कि 20 कुर्सियां 25 लोग 5 बंदे पीछे खड़े हुए हैं, तो नॉट इनफ। और अगर नंबर का इशू है कि सीट्स कम है, कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो बी आंसर होगा। एंड ऑप्शन सी सम ऑफ देम, देम का क्या मतलब है, सीट्स। सीट्स ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, देम कहाँ जा रहा है। सेकंड में है ना नॉट इनफ ऑफ देम का क्या मतलब है, सीट्स। ऑप्शन सी सम ऑफ देम आर वेरी क्लोज टुगेदर, यानी सीट्स कुर्सियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। होता नहीं बस क्लासरूम में कुर्सियां साथ साथ जुड़ी होती, गुजरने तक की भी जगह नहीं होती, तो यहां पे अंडरलाइन कर लें वेरी क्लोज टुगेदर। अब वो स्पीकर अपोलोजाइज करेगी कि आई एम रियली सॉरी, जो भी होगा उसके बाद अगर सीट का साइज प्रॉब्लम है ए हो जाएगा, अगर सीट का नंबर प्रॉब्लम है बी हो जाएगा, और अगर सीट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको पढ़ना है और इसको आंसर करना है। Now, let's get started. Part 2. You will hear a woman speaking to a group of people who are interested in becoming volunteers for an organisation called ACE. Good evening, everyone. Let me start by welcoming you all to this talk and thanking you for taking the time to consider joining ACE Voluntary Organisation. ACE offers support to people and services in the local area, and we're now looking for more volunteers to help us do this. By the way, I hope you're all comfortable. We have brought in extra seats so that no one has to stand, but it does mean that the people at the back of the room may be a bit squashed. We'll only be here for about half an hour, so hopefully that's okay. Okay, we have arranged extra seats. Extra seats आ गई, इसका मतलब है नॉट इनफ ऑफ देम आंसर नहीं होगा। सीट के साइज पे उसने कोई कमेंट ही नहीं किया, साइज उसने बताया ही नहीं। उसने क्या बोला, दैट मीन्स एट द एंड सम ऑफ द पीपल आर स्क्वॉश्ड। सम ऑफ द पीपल आर स्क्वॉश्ड का क्या मतलब है, यानी कुर्सियां बड़ी तंग तंग पड़ी हुई हैं। सो दैट इज ऑप्शन सी, सम ऑफ देम आर वेरी क्लोज टुगेदर। क्लोज टुगेदर के लिए उसने क्या वर्ड यूज किया, स्क्वॉश्ड। स्क्वॉश का मतलब है कुर्सियां ऐसे आपस में जमघटा बना हुआ है उनका, राइट। Okay, question number 12. What does the speaker say about the age of volunteer? Underline करें जी age of volunteer. अब age के बारे में वो स्पीकर जो बोल रही है वो क्या कहती है। ऑप्शन ए लेस इंपॉर्टेंट, देख लिया इतना लंबा चौड़ा ऑप्शन था और मैंने आपको क्या बताया, लेस इंपॉर्टेंट। अगर वो ये बोले एज डजेंट मैटर, इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर यंग और ओल्ड, right? Or we don't consider age. Age is not considered, कुछ भी ऐसे बोले, अगर एज मैटर नहीं है तो ए आंसर होगा। और अगर वो कहती है फॉर वॉलंटियरिंग एज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, राइट। सो व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट द एज ऑफ वॉलंटियर्स। ऑप्शन ए लेस इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी यंग लेस रिलायबल देन ओल्डर, के जो जवान होते हैं ना दौड़ जाते हैं, ठीक है, यंग लेस रिलायबल देन ओल्डर, के जो बेचारे थोड़े मिडिल एज्ड हैं वो फिर भी काम करते रहते हैं, नौजवान जो है ना भाग जाते हैं, गोली कराते हैं एंड ऑल दैट।
क्वेश्चन ऑप्शन सी, मोस्ट वॉलंटियर्स आर अबाउट 60, अंडरलाइन करें अबाउट 60 और मोस्ट को भी अंडरलाइन कर लें. अब अगर मोस्ट अबाउट 60 हैं तो सी आंसर होगा. और अगर वो कहती हैं कि देर आर सम हु आर 60 बट मोस्ट ऑफ देम आर यंगर देन दैट, मोस्ट ऑफ देम यंगर हो गए, तो ये आंसर नहीं होगा. असल में हमने ये देखना है कि कौन सा आंसर नहीं होगा. जब आपको ये पता चल गया कि ये आंसर नहीं होगा तो जो बच जाएगा वो आपका आंसर होगा. ठीक है, नाउ लेट्स सी. और ये तीनों ऑप्शंस डिस्कस होंगे किसी भी ऑर्डर में. कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी चले, हो सकता है सी ए बी, बी ए सी, इस ऑर्डर में जाए. राइट, ये आपने चेक करना है. One of the first questions we're often asked is how old you need to be to volunteer. Well, you can be as young as 16 or you can be 60 or over. It all depends on what type of voluntary work you want to do. Other considerations, such as reliability, are crucial in voluntary work, and age isn't related to these in our experience. बी, हाँ नहीं, आंसर है सी. हाँ, जिसने जो लिखा ना बड़ा खुश हो रहा होगा. राइट, करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है, अब इसको दोबारा सुनते हैं. फोकस कीजिएगा कि बाकी ये क्यों गलत हैं. One of the first questions we're often asked is how old you need to be to volunteer. Well, you can be as young as 16 or you can be 60 or over. You can be as young as 16 or 60 of over. लेकिन उसने ये नहीं बोला कि most volunteers are about 60. उसने ये बोला कि आप 16 से 60 के दरमियान कोई भी एज हो सकती है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हमारे ज़्यादातर वॉलंटियर 60 साल के हैं. तो ऑप्शन सी तो गया. अब जब ऑप्शन सी गया तो आपको पता है अब ए और बी में से एक जवाब होगा. लेट्स गो ऑन. It all depends on what type of voluntary work you want to do. Other considerations, such as reliability, are crucial in voluntary work, and age isn't related to these. Reliability is crucial. Age isn't related to these. कि reliability का उम्र के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. बी भी गया. अब जब सी भी गया, बी भी गया, तो आंखें बंद करके राइट आंसर क्या होगा? ए. In our experience. All right. So as they said in the beginning, this line. One of the first questions we're often asked is how old you need to be to volunteer. Well, you can be as young as 16 or you can be 60 or over. It all depends on what type of voluntary work you want to do. Other considerations, such as reliability, are crucial in voluntary work, and age isn't related to these. ठीक है, अब उसने दोनों ऑप्शंस में बताया कि एज का कोई ताल्लुक नहीं है. 16 से 60 हो जाएं, रिलायबिलिटी का भी एज से कोई ताल्लुक नहीं है. सो द राइट आंसर इज ए, एज ऑफ वॉलंटियर्स इज लेस इंपॉर्टेंट. क्लियर? लेट्स गो ऑन. व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट ट्रेनिंग? अब उन्होंने कोई ट्रेनिंग देनी है वॉलंटियर्स को. उस ट्रेनिंग के बारे में स्पीकर क्या कहते हैं? ए, कंटिन्यूअस, कि ट्रेनिंग चलती रहेगी, हर हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपकी ट्रेनिंग होगी. कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की जगह पे वर्ड आता है ऑन गोइंग. तो अगर तो उनकी ट्रेनिंग ऑन गोइंग है, कंटिन्यूअस है, करेक्ट आंसर होगा ए. बी, कंडक्टेड बाय मैनेजर, अंडरलाइन कर लें, बाय मैनेजर. अगर ट्रेनिंग मैनेजर देगा तो ये राइट आंसर होगा. और अगर वो कहेंगे योर ट्रेनिंग मे बी कंडक्टेड बाय मैनेजर और अदर पीपल, अगर अदर पीपल भी साथ आ जाएं तो फिर मैनेजर खाली तो नहीं ना हुआ, तो फिर ये आंसर नहीं होगा. एंड ऑप्शन सी, टेक्स प्लेस ऑनलाइन. अब अगर वो ऑडियो में बोले ऑल अवर ट्रेनिंग्स आर ऑनलाइन, दिस इज द राइट आंसर. और अगर वो ये बोले कि अवर ट्रेनिंग्स आर ऑलवेज कंडक्टेड फेस टू फेस, वी नेवर गो फॉर एनी ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो ये सी आंसर नहीं होगा. ठीक है, अब फोकस करें. ए बी सी में से 2 ऑप्शंस को आपने उड़ाना है और एक ऑप्शन आपका राइट आंसर है. Another question we get asked relates to training. Well, there's plenty of that, and it's all face-to-face. What's more, training doesn't end when you start working for us. It takes place before, during, and after periods of work. Often, it's run by other experienced volunteers, as managers tend to prefer to get on with other things. No, not A. B, well done. B is the wrong answer. Correct answer is A. ठीक है, अब सुने. और जब तक ये नहीं ना समझ आई कि बी क्यों गलत है, आपने तो लिख लिया बी सही है,
जब तक ये नहीं समझ आई कि बी क्यों गलत है, मल्टीपल चॉइस नहीं होगा. लेट्स सी. Another question we get asked relates to training. Well, there's plenty of that, and it's all face to face. There is plenty of that. That का क्या मतलब है? Training. आ गया ना वही it, that, these, those, and it's all face to face. Option C तो गया. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Online. ऑडियो में क्या बोला? It's all face to face. अब C गया, A और B रह गया. What's more, training doesn't end when Training doesn't end. Doesn't end का क्या मतलब है? Continuous, right? So A will be the right answer. you start working for us. It takes place before, during, and after ठीक है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. इसका भी क्या मतलब है? कंटिन्यूअस है. तो ये आपका राइट आंसर हो गया. periods of work. Often it's run by other experienced volunteers. इट्स रन बाय. इट्स का क्या मतलब है? ट्रेनिंग. इट्स रन बाय अदर एक्सपीरियंस्ड वॉलंटियर्स. अब मैनेजर दे रहा है ट्रेनिंग? नहीं, अदर एक्सपीरियंस्ड वॉलंटियर्स. तो बी भी गया. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. बात समझ आ रही है ना? जब तक रॉन्ग ऑप्शंस नहीं ना समझ आएंगे, मल्टीपल चॉइस नहीं होगा. फिर आप कोई गलत आंसर लिख के बैठे होंगे और आप डबल कॉन्फिडेंट होंगे मेरा आंसर सही है. Okay, let's go on. Questions 14 and 15. Which two issues? Underline करें जी two issues को. Does the speaker ask the audience? अब two issues speaker ask to consider before they apply to be volunteers. अब वो ये कह रही है कि दो चीज़ें ध्यान में रखना वॉलंटियरिंग में आने से पहले, कि अगर आपने रजाकार बनना है तो दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है. अच्छा, अब वो दो इश्यूज़ क्या हैं? होगा क्या? 5 में से ना 3 के बारे में वो कहेगी दैट्स नॉट एन इशू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वी डोंट कंसीडर दैट, वी डोंट वैल्यू दैट. जहाँ पे बोले वी डोंट वैल्यू दैट, वी डोंट कंसीडर दैट, वो आपका आंसर नहीं होगा. ठीक है. ऑप्शन ए, फाइनेंशियल सिचुएशन. फाइनेंशियल सिचुएशन का क्या मतलब है? हाउ रिच और पुअर यू आर. अब अगर ऑडियो में कहे वी डोंट केयर वेदर यू आर रिच और पुअर, तो ये आंसर होगा नहीं. और अगर ये बोले योर फाइनेंशियल सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट या फिर क्रूशल, तो ये आंसर होगा. बी, लेवल ऑफ कमिटमेंट. लेवल ऑफ कमिटमेंट की जगह पे आमतौर पे वर्ड यूज करते हैं डेडिकेशन, कि हाउ मच डेडिकेटेड यू आर. तो अगर डेडिकेशन कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है तो ये आंसर होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा. वर्क एक्सपीरियंस. अब अगर वो ये बोले ऑडियो में वी डोंट केयर वेदर यू आर एक्सपीरियंस्ड और अनएक्सपीरियंस्ड, वी डोंट केयर, या फिर वो ये बोले टू बी अ वॉलंटियर सम एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट, तो फिर ये इंपॉर्टेंट आंसर होगा. ऑल राइट. एम्बिशन. एम्बिशन की जगह पे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं. एम्बिशन की जगह पे फ्यूचर का भी वर्ड आता है, करियर का भी वर्ड आता है, डिज़ायर का भी वर्ड आता है, एंड ऑल दैट. एंड फाइनली इट्स योर अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी के लिए क्या वर्ड आ सकता है? फ्री टाइम. आप वॉलंटियर बनने जा रहे हैं तो आपके पास फ्री टाइम है, आप अवेलेबल हैं उसके लिए कि नहीं. सो टू इश्यूज डज द स्पीकर आस्क द ऑडियंस टू कंसीडर. अब वो दो इश्यूज क्या हैं? Now, I would ask you to consider a couple of important issues before you decide to apply for voluntary work. We don't worry about why you want to be a volunteer. People have many different reasons that range from getting work experience to just doing something they've always wanted to do. But it is critical that you have enough hours in the day for whatever role we agree is suitable for you. If being a volunteer becomes stressful, then it's best not to do it at all. You may think that your income is important, but we don't ask about that. It's up to you to decide if you can work without earning money. What we value is dedication. Some of our most loyal volunteers earn very little themselves, but still give their full energy to the work they do with us. Okay, what we value is dedication. Dedication क्या है? Level of commitment. और उसने बोला your income is not important. कौन सा ऑप्शन कटा? A कट गया, financial situation. ठीक है? So what is the second right answer? Yes, correct answer is B for boy and E for elephant. अब जिन लोगों ने कुछ और लिखे उनके लिए मैं इसको दोबारा प्ले कर रहा हूँ. Now, I would ask you to consider a couple of important issues before you decide to apply for voluntary work. We don't worry about why you want to be a volunteer. Okay, why you want to be a volunteer means ambition.
कि आप क्यों बनना चाहते हैं, नहीं होता मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट. वी डोंट वरी अबाउट व्हाई यू वांट टू बी अ वॉलंटियर. ऑप्शन डी गया. People have many different reasons that range from getting work experience People have many different reasons that range from work experience. अब work experience crucial उनके लिए नहीं है. लोग voluntary work करते हैं ताकि उनको work experience हो. So option C is gone. It's not the right answer. D is gone. C is gone. to just doing something they've always wanted to do. But it is critical that you It is critical, right? It is crucial. It is important. have enough hours in the day. You have enough hours in the day. क्या मतलब है? Availability. You have enough hours in the day. You have enough free time, right? So first correct answer is option E. For whatever role we agree is suitable for you. If being a volunteer becomes stressful, then it's best not to do it at all. You may think that your income is important, Okay, you may think that your income is important. but we don't ask about that. We don't ask about that. So option E, financial situation, it's not an issue. It's not a problem. And what are we left with? B. It's up to you to decide if you can work without earning money. What we value is dedication. What we value is dedication, and dedication is your level of commitment. Good. Now let's go on. Questions 16 to 20. What does the speaker suggest would be helpful for each of the following areas of voluntary work? Now, helpful things are given in the option and area is given in the question, right? Now, when they give you half a minute to read the questions, will you read the questions or the options? Options. Options are more important. And by the way, they will not change the questions. Question number 16, fundraising, litter collection, playmates, story club, first aid, they will go like this. Experience on stage. For experience on stage, they may use the word some acting. If you have done some acting, acting means experience on stage. अच्छा जी, उसके बाद है ओरिजिनल न्यू आइडियाज. ओरिजिनल न्यू आइडियाज के लिए व्हाट कैन दे से? दे कैन से योर ओन आइडियाज, राइट? और दे यूज द वर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग. ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब है ओरिजिनल वर्क. न्यू आइडियाज, फॉर दैट दे कैन से नोवेल आइडियाज. पेरेंटिंग स्किल. पेरेंटिंग स्किल की जगह पे वर्ड आ सकता है टू बी अ फादर, टू बी अ मदर, और टू हैव चिल्ड्रन ऑफ योर ओन, right? Or experience as a father or mother, that is parenting skills. Option D, understanding of food and diet. Food and diet की जगह पे nutrition का word आ सकता है, understanding of nutrition and all that. Retail experience. Retail होता है किसी दुकान पे काम करना. ये जो दुकानें नहीं आमतौर पे बनी होती, retail shops उन्हें हम कहते हैं. Retail experience का मतलब है if you have worked in a shop. So working in a shop means retail experience. Good memory. Good memory की जगह पे आ सकते हैं if you can remember. For example, अगर वो बोले if you can remember phone numbers, or if you can remember important details. If you can remember important details. तो remember important details का मतलब क्या हो गया? Good memory. Good level of fitness. यहाँ पे लिख दिया level of fitness. ऑडियो में क्या बोलेंगे? That you can walk, or if you can run, या फिर if you can walk on the hill, और if you can do cycling. मतलब जिस काम के लिए भी अच्छा लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए वहां पे ये आंसर आपका लगेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर फंड रेजिंग. अब देखते हैं 16 फंड रेजिंग. अब देखना ये है कि फंड रेजिंग के लिए उनको कौन सी चीज चाहिए. एक्सपीरियंस चाहिए, ओरिजिनल आइडिया चाहिए, पेरेंटिंग एंड ऑल दैट. और आंसर ए से जी तक होगा. Now listen and answer questions 16 to 20. Okay, so let's take a look at some of the work areas that we need volunteers for and the sort of things that would help you in those. You may wish simply to help us raise money. If you have the creativity to come up with an imaginative or novel way of fundraising, we'd be delighted. As standing in the local streets or... Okay, imaginative and novel. Imaginative and novel. What does it mean? Original,
New. Novel means new. Imaginative, novel ideas. So that means original, new ideas. And then she said standing in a street. That is old math. Creativity to come up with an imaginative or novel way of fundraising, we'd be delighted, as standing in the local streets or shops with a collection box can be rather boring. Okay, standing in the streets with a collection box can be rather boring. So correct answer is option B. और एक option एक ही दफा use होगा, ठीक है? Now we go on. Question number 17, litter collection. Litter कहते हैं garbage को, trash, garbage. कूड़ा नहीं होता जो उसको litter कहते हैं. Litter collection. One outdoor activity that we need volunteers for is litter collection. And for this, it's useful if you can walk for long periods, sometimes uphill. Some of our regular collectors... Okay, if you can walk for long periods, sometimes uphill. कि पहाड़ पे भी चलना पड़ेगा. क्या मतलब है? Good level of fitness. अब इनकी लैंग्वेज को समझें कि ऑडियो में क्या चलता है, पेपर पे क्या लिखा होता है, कैसे फ़र्क हो सकता है. जब ये समझ आती जाएगी, ग्रेजुअली आपका लिसनिंग का स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा. So correct answer for that is option G. Good level of fitness. Next is playmates. Playmates उनकी किसी एक्टिविटी का नाम है. If you enjoy working with children, we have 3 vacancies for what are called playmates. These volunteers help children learn about staying healthy through a range of out-of-school activities. You don't need to have children yourself, but it's good if you know something about nutrition and can give clear instructions. Okay, if you know something about nutrition, that is understanding of food and diet. Food and diet की जगह पे आ गया nutrition, and if you know की जगह पे आ गया understanding. So correct answer is option D. अच्छा जी, अब चलते हैं question number 19 पे, story club. If that doesn't appeal to you, maybe you would be interested in helping out at our story club for disabled children, especially if you have done some acting. We put on 3 performances a year. Okay, especially if you have done some acting and then we put on 3 performances. So you have done some acting का क्या मतलब है? Experience on stage. Well done. A will be the right answer. Last one is first aid. The last area I'll mention today is first aid. Volunteers who join this group can end up teaching others in vulnerable groups who may be at risk of injury. Initially, though, your priority will be to take in a lot of information and not forget any important steps or details. Okay, not to forget. Take in a lot of information and not to forget. क्या मतलब है? Good memory. अब memory की जगह पे इसने word use किया not to forget. So when you don't forget, it means you have a good memory. Correct answer for question number 20 is F.